Good morning, class first. How are you? Hope you all are fine. So, class first, we have already read about fruit of the week, shape of the week. Alright. So today we will read again. Alright. We will learn once more time. Alright. So, fruit of the week is mango. Fruit of the week is mango. Alright. Fruit of the week is mango. Color of the week is, which color is this? Yellow. Color of the week is yellow. Alright. Shape of the week is circle. Shape of the week is circle. Shape of the week is circle. Alright. Sentence of the week is I am waiting for summer vacation. Okay. Read after me. I am waiting for summer vacation. I am waiting for summer vacation. Alright? It's the sentence of the week. Alright? Word of the week is vacation. Alright? Word of the week is vacation. V-A-C-A-T-I-O-N. Vacation. Word of the week is vacation. Month of the year is A-P-R-I-L. April. Month of the year is April. Month of the year is April. Alright. Month of the year is April. So class first, take out your mental maths book. This one, mental maths. Alright. And open the worksheet number 6. We have already done worksheet number 5. Alright. Now worksheet number 6. Alright. So take out worksheet number 6. Worksheet number 6. Okay. Now count and encircle the correct number. Count and encircle the correct number. You have to count. आपको count करना है and encircle. आपको circle करना है the correct number. We have already done the worksheet. Alright. हमने वो वर्कशीट में पहले ही बना लिया है, कंप्लीट किया था. So count and encircle the correct number. Count it. 1, 2, 3, 4, 5. How many ducks are here? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, here are 5 ducks. So where is 5 number? This. So circle it. Alright. Next. How many cats are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, there are 6 cats. Where is 6 number? Yes, this one. So encircle it. Alright. So class first, you have to write like this. आपको ऐसे ही करना है आगे. Alright. Come to the next worksheet. Worksheet number 7. Worksheet number 7. So, match the same number of objects. Match the same number of objects. आपको क्या करना है? You have to match the same number. Means आपको पहले count करना है और उसके बाद आपको match करना है same numbers में. Alright? Like, count it. 1, 2, 3, 4. There are 4 dogs. Then 1, 2, 3, 4. There are 4 fans. So it's a same number. So match it. Alright. Then count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 guavas. Then 7 is 7 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, it is.
So you have to match this. Alright, same numbers पे आपको क्या करना है? You have to match. Alright, so come to the next worksheet. Worksheet number 8. Okay, worksheet number 8. Write numbers which come just before the given numbers. Alright, now it's a what comes before. Alright, इस नंबर से पहले क्या आता है? राइट नंबर्स, आपको नंबर्स लिखना है जस्ट बिफोर द गिवन नंबर्स. जो यहाँ पर आपको नंबर दिया है, यू हैव टू राइट नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर्स. ऑलराइट, सो लाइक 4 number. Alright, 1 2 3 4. Alright, 4 number. Just 4 minus 1 means 4 से just पहले क्या आता है? What comes before 4? Yes, it's 3 number. Alright, it's 3 number. Now second number is 7. Count the umbrellas. 1 2 3 4 5 6 7. 7 umbrellas है, बट आपने 1 माइनस कर दिया इसमें से. ठीक है, देन 7 में से 1 माइनस किया आपने, देन लेफ्ट कितना बचा यहाँ पर? 7. एंड व्हाट कम्स बिफोर जस्ट 7 से जस्ट पहले क्या आता है? यस, नंबर 6. ऑलराइट, नाउ 1 2 3 4 5 6. There are 6 penguins. Alright, 1 minus and 6. 6 से जोड़ना है. So, next question is write numbers which come just after the given numbers. Alright, जो यहाँ आपको numbers दिए हैं उसके just after क्या आएगा वो आपको लिखना है. Alright, so here 9 number is here. So count the pumpkins. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 में हमने +1 ऐड किया, 10. ऑलराइट, तो व्हाट कम्स आफ्टर 9? नंबर 10. 9 के बाद क्या आता है? नंबर 10. ऑलराइट, नेक्स्ट इज 5 नंबर. 5 के जस्ट बाद क्या आएगा? यू हैव टू काउंट इट. 1 2 3 4 5. 5 देन +1. 1 प्लस कीजिए उसमें. 5 6. Number 6. Alright, how many horses are there? Count it. 1 2 3 4 5 6 7. There is 7 horses, like 7 number. Then +1. 7 के just बाद 8. आपको पूरा काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. So here 8 number. That's how you have to do. Alright, okay. So class first, take out your next maths book, Maths in Real Life. Alright, we have already done inside, outside, more, less. Alright, now we will do rolling and sliding. Okay, rolling and sliding. ROLLING, rolling, and SLIDING, sliding. Rolling and sliding. Okay, so some objects roll while some slide. Look at the picture. A ball rolls. बॉल क्या करता है? रोल करता है. रोल मीन्स लुढ़कता हुआ जाता है. एंड अ बुक स्लाइड, बट जो बुक है वो स्लाइड करती है. ऑलराइट, स्लाइड मीन्स फिसलती हुई जाती है. ओके, सेम थिंग्स. हमेशा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं? रोल करती हैं. सम ऑब्जेक्ट्स रोल एंड सम स्लाइड्स. ऑलराइट, सो कम टू द एक्टिविटी 8. Tick the object which roll and cross the object which slides. Alright, you have to tick the object which roll. जो चीज़ें रोल करती हैं मीन्स रोल लुढ़कती हुई जाती हैं, रोल करती हैं, you have to tick. And which objects and some objects which slides, you have to cross it. Alright, so picture first. This is a bat. Bat roll करती है या slide? Yes, it's sliding. ये slide करती है. So you have to cross it. Okay. Now ball. Ball roll करती है या slide? Yes, roll. So tick. And this one. This is a can. Okay, cold drink can.
So this can is roll or sliding? Yes, it's rolling. So tick. Now this is an apple. Apple क्या करती है? Roll या slide? Roll, because it's circle shape. All right, sphere shape. So take the apple. Now this is a box and square shape, है ना? तो जो स्क्वायर शेप की चीज़ें होती है वो क्या करती है? स्लाइड करती है. सो क्रॉस हेयर. नाउ इट्स अ मैच बॉक्स. मैचेस. ऑलराइट. सो इट्स स्लाइडिंग और रोलिंग. क्या करती है ये? यस, इट्स स्लाइडिंग. सो क्रॉस इट. ओके. जो भी जितनी भी राउंड चीज़ें होती हैं, राउंड में सर्कल, स्फीयर, लाइक एप्पल, बॉल, फुटबॉल, कैन, तो वो क्या करती है? वो रोल करती है. ओके. लुढ़कती हुई जाती है, रोलिंग करती है. एंड जो भी ऑब्जेक्ट्स स्क्वायर शेप के होते हैं, स्क्वायर लाइक बॉक्स, मैच बॉक्स, बैट, बुक, देन दे आर sliding. All right. So now next, come to the next chapter. Same and different. SAME, same. DIFFERENT, different. Same or different. Same means एक जैसी and different means अलग अलग. All right. Different means मतलब सबसे अलग. Like this is a book, this is a pencil, this is the rubber and this is the bat. All right. Which one is different? Different means इनमें अलग कौन सा है? Yes, book, pencil, eraser and bat. Which one is different? The girl is saying this is different. Which one? Bat. Bat is different because we use writing or work, राइटिंग, रीडिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेंसिल, इरेजर एंड बुक और कॉपी. ऑलराइट, नोटबुक. बट बैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वाइल वी आर, जब हम क्या करते हैं? वैन वी प्ले, जब हम खेलते हैं तब हम बैट का यूज़ करते हैं, क्रिकेट वगैरह में. ऑलराइट. बट जो रीडिंग है, राइटिंग है, अपने स्टडी टाइम के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो है पेंसिल, इरेजर एंड बुक. सो दीज आर सेम एंड बैट इज़ डिफरेंट. ऑलराइट. So do the activity 9. Circle the different one. You have to circle the different one. जो इनमें से different है, अलग है ग्रुप में. ये जो 4 चीज़ें दी हैं आपको, 4 things, इनमें जो सबसे अलग है उस पर आपको you have to circle it. Circle करना है. Alright. So let's do orange, apple, ice cream, mango. Which one is different? Yes, आइसक्रीम, बिकॉज दीज आर फ्रूट्स. ये तो फ्रूट्स है बट आइसक्रीम इज स्वीट और आइसक्रीम है ये फ्रूट से बिल्कुल अलग है. ओके. सो सर्कल द आइसक्रीम. ऑलराइट. नेक्स्ट इज कार, स्कूटर, बस एंड बोट. विच वन इज डिफरेंट? क्या है इनमें अलग? यस, बोट, बिकॉज दीज आर लैंड ट्रांसपोर्ट. ये सड़क पर चलती हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, लैंड में चलती है, लैंड ट्रांसपोर्ट है. बट बोट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर में, पानी में चलती है ये. ऑलराइट. पानी में तैरती है. बोट पानी में चलती है. और ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 गाड़ियाँ, ये लैंड पर चलती है. दीज आर लैंड ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज वाटर ट्रांसपोर्ट. सो बोट इज़ अ डिफरेंट. ये क्या है? सबसे अलग है इस ग्रुप में. ऑलराइट. नाउ नंबर 3, फिश, डॉग, टाइगर एंड कैट. विच वन इज डिफरेंट? यस, फिश, बिकॉज दीज आर एनिमल्स. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे क्लास फर्स्ट. यू हैव टू डू मेंटल मैथ्स. आपको मेंटल मैथ्स में करना है वर्कशीट नंबर 8 तक. एंड यू हैव टू डू also this. आपको ये भी करना है, rolling, sliding and same, different. Alright. So it's enough for today. Do your work and send me the picture of your homework. Alright. Thank you class.